नमस्कार। आज हम इस प्रेजेंटेशन में एक ऐसे स्मार्ट गांव के मॉडल की प्रेजेंटेशन करने वाले हैं जो कि हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र का की कायाकल्प करके रख सकता है। Up until now, our focus has primarily been on smart cities, which unfortunately has resulted in the neglect of rural areas. We are not opposing the development of smart cities in the country. However, there should have been an equal emphasis on rural development as well. We have been working on the concept of smart villages for a long time. Our smart village model proposes an integrated approach to rural development by encompassing all the rural development schemes of both the central and state governments. Unlike other approaches that rely on half hearted measures, our model emphasizes the importance of addressing all the underdeveloped villages across India with the aim of transforming the rural landscape. Panchayats play a central role in the execution of our rural development model. In this presentation, we will highlight the key features of smart villages and demonstrate how this can be achieved by actively involving village communities and panchayats. For a detailed explanation of the smart village model, please click on the web link provided in the slide. जब आप स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आपको कुछ इस तरीके का वेब पेज मिलेगा जिसमें कि इस मॉडल की पूरी जानकारी दी गई है। गांधी जी ने कभी कहा था कि गांधी जी फाउंड द ओनली वे ऑफ ब्रिंगिंग होप of good living to the rural people is by making the village the central place in the economic program. Rural development, as outlined by Gandhiji, contained self-sufficiency, interdependence for other wants and development of village industries. तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने भी गांवों को प्रमुख स्थान दिया था किसी भी आर्थिक विकास की योजना में। आइए देखते हैं स्मार्ट गांव का मतलब क्या है। स्मार्ट गांव का अर्थ है एक ऐसा गांव जो तकनीक, स्थायी विकास और समग्र जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचारों का उपयोग करता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी लाइक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच, सतत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जैसे कि सौर ऊर्जा, जल प्रबंधन, जल संरक्षण और कुशल सिंचाई प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाएं जो कि टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी हैं, और शिक्षा, डिजिटल क्लासरूम और कौशल विकास कार्यक्रम। और स्मार्ट गांवों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना और आजीविका को बढ़ावा देना है। तो in English, the concept of smart villages in India aims to improve rural living standard through technology and sustainable practices. These initiatives these initiatives focus on enhancing infrastructure, providing better healthcare and education, and promoting economic development. अब प्रश्न ये उठता है कि why this model? कि अभी रूरल डेवलपमेंट पर और भी कई मॉडल है, तो यही मॉडल क्यों? तो ये मॉडल हमने इसलिए प्रस्तुत किया है कि गांधी जी अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ विलेजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दस आवर मॉडल इज बेस्ड ऑन गांधीयन इकोनॉमिक प्रिंसिपल और व्हाट इज नोन एज गांधीयन इकोनॉमिक्स। एक अन्य कारण यह है कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस। 62% of India's population live in villages. As of 2019, there are a total of 664,319 villages compared to 649,480 villages in the 2011 census of India. एक अन्य कारण यह है कि half-hearted measures in rural development does not seem to work. We need an integrated approach to rural development. The focus and thrust of development should start from villages for an overall economic growth. This model, we are sure, will transform the landscape of rural India
and push the GDP growth rate. आइए अब देखते हैं कि इसकी फीचर्स क्या हैं। जैसे कि हिंदी की स्लाइड में भी मैंने बताया था, तो थोड़ा इंग्लिश में बताते हैं कि इस स्मार्ट विलेज की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस स्मार्ट विलेज में होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड डिजाइन प्रोसेस, जिसको हम आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे। एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रीन एंड रूरल टेक्नोलॉजीज। सस्टेनेबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, गोबर गैस प्लांट, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और टेलीमेडिसिन और एजुकेशन इनिशिएटिव्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन schemes like farming, poultry, fisheries, dairy farming, forestry, etc. Efficient water management like water conservation, water treatment and irrigation. Waste management, rural IT, यानी कि digital connectivity, cold storage and warehousing, and marketing, e-chopal and supply chain logistics, rainwater harvesting, groundwater recharge, sports infrastructure, क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो गांव की हम कल्पना कर रहे हैं उनमें ये सब विशेषताएं होनी चाहिए, और इंटीग्रेटेड रूरल अप्रोच के जरिए हम लोग ये स्मार्ट विलेज का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। अब देखिए कि इंटीग्रेटेड डिजाइन प्रोसेस होती क्या है। Integrated design process, as it relates to green building, an integrated process is a method used for the design and operations of sustainable built environments. What it boils down to is getting everyone who will be involved in the project, from the design phase to construction to the actual day to day operations, together right from the start to collaborate. अभी भारत सरकार की कई स्कीम्स हैं और राज्य सरकारों की भी कई स्कीम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, जिनमें प्रमुख है प्रधानमंत्री की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो व्हाट वी आर रिकमेंडिंग इज merger of all central and state government schemes into one scheme and transfer to one nodal agency. The employment can be generated through civil work, farming, poultry, animal husbandry, fisheries, dairy farming, forestry, etc. और एक अन्य विशेषता ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड रूरल एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, और फॉर एनर्जी एफिशिएंसी we can introduce solar, wind, hydro, gobar gas plants in the smart village. So जो इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है, इंटीग्रेटेड डिजाइन प्रोसेस विल इंक्लूड वाटर कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द डिजाइन प्रोसेस ऑफ द स्मार्ट विलेज। और रूरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत सरकार की कई एजेंसियों ने रूरल एरियाज के लिए कुछ खास टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। सो वी आर रिकमेंडिंग डोमेस्टिकली डेवलप्ड रूरल टेक्नोलॉजीज फॉर स्मार्ट विलेज, लाइक रूरल बाजार, रूरल सॉफ्ट 2000, प्रिया सॉफ्ट, ई एनरिच, डीआरडीए पोर्टल्स, रूरल सॉफ्ट और कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और टेलीमेडिसिन और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी इसका एक पार्ट होंगे। अब ये सवाल उठता है कि हाउ टू इंप्लीमेंट स्मार्ट विलेज विजन। सो सबसे पहला है कम्युनिटी कंसल्टेशन, कंसल्टेशन विद द विलेजर्स एंड पंचायत, एंड देन entering into an agreement with panchayats to acquire the village and moving them to smart village. So इसमें जो पहला स्टेप है, first develop the smart village and then move the entire existing underdeveloped village to smart village. And we are recommending construction of model village under PPP, यानी कि public private partnership मॉडल के अंदर, and engaging reputed builders familiar with design, integrated design process and clean and green rural environment friendly technologies, and employment generation schemes through central government and state government and private sector agencies. रिकमेंडेशंस क्या है इस मॉडल की, स्मार्ट विलेज मॉडल की, आइए देखते हैं। एज ए फर्स्ट स्टेप वी शुड डेवलप वन स्मार्ट विलेज इन ईच स्टेट।
तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनके एक 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 राज्य में एक एक स्मार्ट विलेज से शुरुआत की जा सकती है. रिमेंबर द फोकस शुड बी on underdeveloped villages across India. So we are not recommending implementation of smart village model on all the villages, but only on underdeveloped villages across India. And step one, as we mentioned in the previous slide, consultation with the villagers and panchayat and entering into an agreement with them. First, develop this smart village and thereafter move the existing village and its inhabitant into newly developed smart village and repeat the process across India. As we mentioned earlier, it should be based on PPP model, which is public private partnership. However, cooperation is needed at central, state government, district level and panchayat levels. Initial allocation for funding may come from central government but gradually will move towards PPP. तो अब आपको बताना कि ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया.